listening to Anyway Well. इन्हें बस फेम है दिखता, उठा रखा मैंने गेम है दिखता, इन्हें बस दिखते हैं नंबर्स, हसल और पेन नहीं दिखता। Hey guys, what's up? This is Karma और अगर आप मेरे को जानते हैं तो मैं एक रैपर हूँ, एक हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ। राइट नाउ मैं काम कर रहा हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट पे विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आई एम विद ऑरस टीम एंड मॉर्टल, इन दोनों के साथ एसोसिएट होके आई एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड द गेम इज़ ऑन। जब पहली बार मैंने इस ट्रैक के बारे में सुना, जब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पहली बार, like my manager called me, the team called me, I was so excited क्योंकि I myself am a gamer a bit and I wanted to do something in this part of industry as well. So I got to know that they are looking for a song which is going to be for gamers, gaming society के लिए, gaming community के लिए, plus an hip hop track to keep everybody boost. So what happened is that Mortal called me and he was like, bro, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ है, it's a chaos and it's beautiful at the same time. So मैं चाहता हूँ कि यार तू इसको अपने शब्दों में लिख दे. And the fun part is that likewise I share 50% of his story. So the process of writing, it was fun and challenging at the same time, क्योंकि मेरे को ध्यान में था रखना कि मैं किसी और के लिए लिख रहा हूँ, but at the same point these things were happening with me as well. So I started by searching for a good beat. I contacted my producers. मैं खुद भी beat पे काम कर रहा था. And the most important part, जो मेरे को सबसे important और technical part लगा, मैं चाहता था कि कि इसको सब समझ लें. मैं नहीं चाह रहा था कि इसके वर्ड्स इतने कॉम्प्लेक्स हों, इतने ज़्यादा शब्द कॉम्प्लेक्स हों जिससे प्रॉब्लम आ जाए एक लेमैन को समझने के लिए. बट ऑन द सेम टाइम द चैलेंज वॉज टू मेक इट कॉम्प्लेक्स ताकि वो साउंड कॉम्प्लेक्स करे. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड कि मैं जब से गेम में तब से हैक ऑफ एंड हेड शॉट एंड ऑल दैट. सो आई वॉन्टेड टू मेक दैट कि इट्स ईजी राइटिंग बट कॉम्प्लेक्स फ्लो. वट आई डिड, जो मेरे को मॉडल ने बोला एंड वट आई थॉट कि इम्प्रोवाइज हो सकता है, आई डिड दैट. वेंट ऑन अ बीट and the first take was good. Everybody loved it. I enjoyed the process and yeah. So यार I feel जब उस वक्त मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं जितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं उतना बीट भी है. और एक मैं किसी की कहानी के बारे में मैं I'm talking about somebody's story, right? So मैं बीट सोच रहा था around say 74 to 76 BPM and guess what, I got one of 75, so it was great. What happened is that मेरे को गीगाबाइट के बारे में पहले ही था पता. And when I got to know that AORUS is under that umbrella, I got so excited and they sent me an PC to work with and it's been fabulous, it's smooth. So जब मैंने PC use किया so यार processing time इतना smooth है और इतना short है कि I loved it. And यार इसमें Intel का सबसे latest processor है. So like यार लोगों को ये नहीं पता है कि मैं games भी खेलता हूँ और बहुत खेलता हूँ मैं, मेरी टीम साथ में. The best part about this PC is इसमें गेम खेलो, मल्टीटास्किंग करो. आई मेड अ प्रोजेक्ट ऑन इट क्योंकि इसमें इंटेल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है एंड आई फील दैट इट्स अ बीस्ट एंड आई वुड लव टू वर्क मोर ऑन दिस. लाइक दिस प्रोसेस हैज़ बीन फन. मैं चाहता हूँ यार कि मैं थोड़ा और गीकी हो जाऊँ इसके बारे में बिकॉज आई वांट हैव माई ओन PC, आई वांट बिल्ड माई ओन PC. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम एंड विद AORUS and Gigabyte in future. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा गेमर्स के साथ कोलैब हो because I would love to give for this community. Peace out. So guys, I am editing this music video for Kalamkaar studio with artist Karma and Mortal. They are one of the best artists and this footage is shot on a Sony A7S III with profile 4K 4210-bit. It's a very heavy profile, so you need to choose your PC very wisely. I'm editing this video on new Intel i9 12900K and Z690 AORUS Master. So this is the new design processor with efficiency cores with a new Intel architect which matches to the right core to the right workload. This machine has that graphic card which is AORUS 3080 graphic card. So it has 360 liquid cooling and 2TB SSD Gen 4. So it has DDR5 RAM with a power supply of AORUS AP850. So normally when I edit my videos, I edit on proxy files, but personally I love to edit on original footage because you can
see the minute details, you can see the actual quality of the footage while editing only. And if you have a fast strong machine like this, then it's fun to edit on original footage because the rendering is fast and the editing is very smooth. All this power and speed in the beautiful case of AORUS C700G.